चलो तो आज हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट? ट्रांसवर्सल लाइंस वी नो, राइट? व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसवर्सल लाइंस? अ लाइन which intersects two or more different lines at distinct points, which is called transversal line. But आज जो हमें पढ़ना है अभी वो है parallel lines के related. तो सबसे पहले let us understand what do we mean by parallel lines. Okay, so let us discuss. See, if two lines, say a line P and a line Q, right? If these two lines, right, are in a same plane, first of all क्या है कंडीशन? सेम प्लेन. तो आप देख रहे हो कि ये बॉर्ड का जो प्लेन है उसके अंदर दोनों लाइंस है, राइट? तो इफ टू लाइंस आर इन अ सेम प्लेन एंड दे आर नॉट मीटिंग एट ईच अदर एट एनी पॉइंट, यानी कि कोई भी पॉइंट पे, राइट, कभी भी दे नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर. ओके, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. तो ऐसी पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल अगर हम ड्रॉ करें, मींस कि दो पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे, यानी कि वी कैन से डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, इफ इट इज इंटरसेक्टिंग, देन वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट? ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस. ओके, दिस इज व्हाट वी मीन बाय ट्रांसवर्सल ऑफ parallel lines. Clear? Now we need to understand here that what are the angles made by this transversal of parallel lines. Okay, see, so there are here we can say that there are total 8 angles which is made by this transversal of parallel lines, right? चार टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं ना. देखो, let's say namely we can say, अगर हम नाम दे रहे हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, इसको मैं नाम दे रहा हूं 2, राइट? इसको मैं नाम दे रहा हूं 3 और इसको मैं नाम दे रहा हूं 4. बराबर? सेम वे यहां पे मैं नाम दे रहा हूं 5, यहां पे मैं नाम दे रहा हूं 6, यहां पे मैं 7 और यहां पे 8, राइट? तो देयर आर टोटल 8 एंगल्स व्हिच इज मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस. नाउ हियर, first of all we need to understand that, right? Again I am drawing this, right? And first of all we need to understand that corresponding angles of transversal of parallel lines are always what? Always equal. Now we know that what do we mean by corresponding lines? Sorry, corresponding angles. बराबर? So corresponding angles of what? Transversal of parallel lines, right? यानी कि parallel lines का जो transversal है जिससे corresponding angles बन रहे हैं, right? They are always what? They are always equal. वो कैसे होते हैं? Equal होते हैं, राइट? तो ये हम देखते हैं. देखो कैसे है. तो let me draw a diagram again. Consider this diagram. This is a line P, this is a line Q, right? And now I am drawing a transversal T. Now we can say that this line P and this line Q both are parallel to each other, right? Parallel. Why? Because if we are tracing them, right? अगर मैं दोनों को एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट, यहां पे भी एक्सटेंड करूं, राइट, या तो यहां पे भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट, तो वी कैन से, राइट, एंड हमें दिख रहा है कि क्या दे विल नेवर मीट ईच अदर, राइट? कभी भी वो एक दूसरे को कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या तो क्रॉस या तो दे विल नेवर मीट. दैट्स व्हाई दिस P and Q लाइंस आर व्हाट? पैरेलल लाइंस. क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस. क्लियर? तो अभी ओके, तो अभी ये पैरेलल लाइंस P और उसका ट्रांसवर्सल T. अभी इन दिस केस व्हाट आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? तो वी कैन से दैट हियर, राइट, एंगल 1, ओके, and this angle
5. These two are what? Pair of corresponding angles, है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 and angle 5 are pair of corresponding angles, राइट? ओके, अभी और भी पेयर्स है कि सिर्फ 1 and 5 यानी कि एक ही पैर है करस्पॉन्डिंग एंगल की, राइट? तो देयर आर, वी कैन सी दैट देयर आर और another 3 pairs which are pair of what? Corresponding angles, right? Namely they are what? तो यहां से हम बोल सकते हैं, देखो 1 and 5, फिर we can say this, right? 4 and 8, okay? फिर 2 and 6 and 3 and 7. These all are also what? Pairs of corresponding angles. But यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1 and 5, right, are pair of corresponding angles, but therefore they are what? तो angle 1 is equals to angle 5, यानी कि angle 1 का जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट किसका होगा? एंगल 5 का। वो कैसे पता चलेगा? तो देखो अभी मैं यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट, वो ट्रांसवर्सल लाइन का मैं कंफिगरेशन चेंज कर रहा हूँ। कंफिगरेशन चेंज कर रहा हूँ मींस अभी ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसी है, स्लैंट, राइट? अभी मैं उसको थोड़ा चेंज करके ऐसा कर रहा हूँ, राइट? तो लेट अस कंसीडर अनदर डायग्राम, ओके? अगेन दिस इज लाइन P, दिस इज लाइन Q। अभी देखो यही ट्रांसवर्सल लाइन को मैं जस्ट चेंज करके क्या कर रहा हूं? ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर? तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 एंड ये जो एंगल 5 है दोनों समवट एक्यूट एंगल है, बिकॉज लेस देन 90 डिग्री, है ना? तो एक्यूट एंगल्स थे। अभी मैंने ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसका कंफिगरेशन मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ये जो एंगल 1 बना, राइट, वो समवट क्या बना? ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि क्या बना? ऑब्ट्यूज एंगल, बराबर? तो ये भी एंगल 5 भी क्या बन रहा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ये भी क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि इन ईच केस, राइट, इफ द configuration of transversal line changes, then also corresponding angles, यानी कि pairs of corresponding angles are always what? Always what? Equal. So that's why this is the what we can say rule, right? This is the first rule for transversal of parallel lines, right? Which is what? कि corresponding angles या तो pairs of corresponding angles of transversal of parallel lines are always equal. Clear है? This is the first rule for transversal of parallel lines, right? यानी कि अगर आप यहाँ पे और कुछ चेंज करोगे एंगल तो भी उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे? चेंज हो गए। एंड नॉट ओनली दिस पैर, राइट? ये हमने जो बात की कि 4 and 8, 2 and 6, 3 and 7, these also are what? Equal. Clear है? तो this is the first rule. Okay? Next में हम देखेंगे second rule for transversal of parallel lines. Okay?